और भी गले नहीं और भी गले नहीं वो होटल नहीं देखो इधर देखो मैं देखी मैं तेरा फोन देखो ओ हेलो लीक कर दे ये कौन पेंगुइन चले थी कौन वीडियो देखो हां भाई ये थिला ये कलर कोले मन कोले कमे को नहीं तो इधर हमरो ये कलर सी कलर रखिया बे मैंने करे थी पर जेंटल के ने ग्रीन कलर और यदि ग्रीन कर दे तो कौन देखा ग्रीन कलर से तो नहीं देखा मेरे जो लोगो तेरे ये आसे ना ये कहिया बता जो लैंग्वेज कॉर्पोरेशन तार भी कलर थिला प्रॉपर्ली जो स्ट्रीक है कि दे प्रॉपर्ली स्टेट है सेंटी रखिए Yes, good afternoon, students. ये तो क्रिएटिविटी Good afternoon, sir. पहले कम्युनिकेशन Good afternoon. ये mic on. ये मुझे बोलना है ये जल्दी एक्टिवेट पड़ियो से जो तो एटा ब्लू एक पॉकेट है डार्क है अच्छा बच्चे कितने हो आप लोग ना 8 only. Let's just wait for them कि कितना टाइम बचा है करते हैं. और पासवर्ड कौन है ये जानी ये जो पासवर्ड एटीआर पासवर्ड होची मंगरी से कॉपी करे तो लिखा है छोना का ठीक मन था सुब्रत $1 2 3 हां मन पहले सुब्रत $1 $1 का जो रुपीस को इंडिया रे सब पड़े समुद्र एकादश सुब्रत कैपिटल लेटर यस कैपिटल जब करी मैं फर्स्ट टाइम लिखा करे काम पासवर्ड भी निकाल अरे तो $5 এটা কোন $1 এটা সেটা তো পড়া तो सही है दुईटा दिनो করছিলাম ये तो है कोई लड़ टीचर ना देखूंगे मैं सब तो टीचर वाली ग्रुप है तो मैं Okay, students. So let's just start. Okay, let's just start the thing. Okay, first of all, we all completed the syllabus. सबको पता है syllabus complete हो चुका है? Yes or no? Yes, sir. है ना? Syllabus complete हो गया है. तो अभी वैसे आपकी 31st से मतलब थोड़ा सा winter vacation भी है. Then after probably we will going to have your like pre board. Okay. तो अभी के लिए revision start करते हैं. Is it a better deal? रिवीजन स्टार्ट करें है ना एक एक चैप्टर को पकड़ेंगे एक एक चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे है ना बेटर रहेगा यस सर टेंशन आ गया तो ठीक है तो रिवीजन करेंगे तो जैसा है तो उसी बेसिस पे हमारा रिवीजन चलेगा तो चैप्टर अभी हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर देते हैं लाइक आई हैव स्लाइड्स आउट देयर ठीक है तो इसी का स्टार्ट करते हैं क्लियर
या बताओ किसी को कोई पर्टिकुलर रिवीजन करवाना है तो, मतलब नॉट टुडे बट पर्टिकुलर कोई चैप्टर या एनीथिंग। हिस्ट्री। हिस्ट्री, मुझे पता था ये तो वर्ड आना ही है, हिस्ट्री। ठीक है, कोई नहीं, हिस्ट्री का भी होगा, डोंट वरी। हिस्ट्री का भी हम अच्छे से सम अप कर लेंगे। ठीक है, सो हिस्ट्री, ठीक है हिस्ट्री करेंगे बट आफ्टर लाइक विंटर वेकेशन। ठीक है, हिस्ट्री का जब कर पाएंगे हम विंटर वेकेशन पे करेंगे। ठीक है, एंड यस दिव्या, हिस्ट्री चैप्टर 2। हाँ, हिस्ट्री के बच्चे 2 ही चैप्टर है ना, तो दो ही चैप्टर करेंगे हम। ठीक है, 2 ही चैप्टर आ रहा है, 2 ही चैप्टर के मैथ्स को भी हमने अच्छे से समझना है। ओके, आई शेयर्ड यू द मैथ्स ऑल्सो। so history is also we have done, like हिस्ट्री के मैंने मैप पोर्शंस भी दिए ना आपको, यस और नो? यस सर। Yes, बच्चों. Hello, I'm audible or not? Okay. Okay, चलो. So now the thing is, okay, chapter 2 बस कच्ची chapter 2 डिलीट नहीं हो, 1 और 2 ही आ रहा है बच्चे। देखो मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड करी है, तो उसमें चेक करना कि ओनली 2 चैप्टर्स आर कमिंग, एंड उसी 2 पर्टिकुलर एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी में से एक आपके 2 मार्क्स से मैप पोर्शन भी आएगा। ठीक है, मैप पोर्शन भी प्रॉपर्ली गिवन है कि पर्टिकुलर क्या क्या आपने करना है। चलो फिर एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो बेटर भी है के लिए। So I'm just sharing the screen visible. यस सर। मुझे स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, यस सर। देखो दिस इज चैप्टर फर्स्ट, दिस इज चैप्टर फर्स्ट। ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 2 टॉपिक है। डेवलपमेंट टॉपिक आपने इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे से क्लियर करा है अपने आप को। ठीक है, डेवलपमेंट टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है। तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू, देखो रिसोर्सेज व्हाट, रिसोर्सेज व्हाट, देखो रिसोर्सेज कल्चरली, देखो दे आर 3 थिंग्स आर देयर दैट इज एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज। Okay, that is associated with the color resources. Okay, so one thing is a culture, the resource, if I would say just define the resource according to you, what do you understand? Just tell me. Yes, tell me. Like just tell me कि resources को हम किस basis पे available on earth and satisfy our needs. Okay, that satisfy our needs. Okay, so okay, that satisfy our needs. ठीक है, अब our needs मतलब resources को हमने बोला कि अब देखो इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है हमने जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और रिसोर्सेज हमारे बेसिकली हो। ठीक है, अब इसमें, अब देखो इसमें है आपका 3 थिंग्स आर देयर, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल, टेक्नोलॉजिकल एडवाइस एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट कि रिसोर्सेज में क्या है बेसिकली, जस्ट वेट अ मिनट।
Okay, so basically the resources are what? Resource. But am I audible na to all? Yes, sir. Okay. Okay, so the resources को क्या है हम like from three factors we define a resource that we consider. The resources were technologically like accessible and it has to be economically feasible. Economically feasible देखो आपको मैं बताया था like कुछ ऐसा रिसोर्स ना हो कि जिसको निकालने में ही इतना पैसा लगे कि हम उसको बेच ना सकते है ना और टेक्नोलॉजी का हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू like that's why we are able to extract that or make that particular thing into a resource. Okay, and cultural acceptance. If we are able to like this mobile phone is also a kind of resource to us, yes or no? This earphone is also considered to be a resource to us. This is also considered to be a resource to us, है ना? So now अब देखो इसमें there is a one pyramid is also given. Pyramid or you can say triangle is there. Human beings are associated with three other things that is physical environment, technology, institution. Okay. तो आपको रिसोर्स का सर्कल समझ में आया सबको कि बेसिकली थ्री थिंग्स से कैसे कनेक्ट है इंटरडिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग resources. Yes, sir. Isn't? Yeah. Okay. So now human beings are like human beings जैसे तीनों से associated. If I would say कि हम human beings भी हम associated है तो कैसे associated है देखो human beings कैसे होते हैं देखो basically technology wise, institutional wise and a physical environment. Like we have a three things out there. Okay. Just wait a minute. Okay, so now the human beings अभी हमने देखा देखो अभी हम स्कूल में like if you say there is an institution we are connected to an institution and our environment is what environment क्या है हमारा surrounding in our home we are homebound right now and technology we are able to connect तब सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है ना कि ह्यूमन बींग्स को तीनों से आप कनेक्ट करके देखे तो इंस्टीट्यूशन है लाइक वेयर यू आर स्टडिंग this digital classroom is an institution physical environment in which you are reading digital virtual classes are there isn't you know sitting in front of us like but still we are able to teach we are able to like you are able to get study and we are able to teach you isn't or not just through the medium of technology clear okay so now we then come over to the classification of resources the classification की हम बात करते हैं तो classification देखो if I talking about a classification or the geography without any classification the geography subject always there you will going to face a classification okay. So even in resources also we have a classification. Okay. अब resources के किस basis पे हम classification करा है, classified करा है. There are four types of classifications are there. Okay. First we classify on the basis of the origin. Okay. On the basis of origin, first is abiotic और biotic. Clear? पहला क्या होता है biotic और abiotic होता है. Biotic क्या होता है? What is the meaning of biotic? Biotic क्या होता है? Refers to living organism. Living organism. Yes. Biotic means living organism or abiotic means non-living organism. Non-living. हम भी तो अबायोटिक है ना ह्यूमन भी तो अबायोटिक होते हैं ना ह्यूमन अबायोटिक है ना No, sir. Biotic. बायोटिक है हाँ सही है ह्यूमन था चलो ठीक है मेरी वॉइस आ रही है सही मेरे सॉफ्टवेयर से so basically humans are biotic in nature and we are also part of a resource we are considered to be a resource ठीक है अभी हम भी रिसोर्सेज है ना आप लोग कौन से टाइप के रिसोर्सेज हो अभी हम देखो नीचे पढ़ेंगे उसको इस स्लाइड के नीचे है वो वाली स्लाइड बट जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स यू आर राइट नाउ टेल यू अर्लियर इन दिस like why I was speaking this type of resource of Sir, पोटेंशियल रिसोर्स potential. अभी पोटेंशियल इतना है कि आप अभी आप फटाफट से बहुत अच्छे स्कोर लेके आओगे लेकिन अभी पोटेंशियल को गेन करने के लिए मार्क्स को लेके आने के लिए आपको थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा एबिलिटी है बट फॉर टू परफॉर्म दैट एबिलिटी यू नीड टू मेक दैट you have to shape that ability no you have to create your skills and knowledge yeah so next we have on the basis of exhaustibility
अब एग्जॉस्टिबिलिटी, अब सबके हाथों में कुछ ना कुछ खाना पीना सब खाते हो क्लास लेते टाइम, है ना? तो एग्जॉस्ट हो जाता है, एक बार खाया फिर खत्म ना, दोबारा बनाना पड़ता है। पर ऐसा कुछ है कि जो एक बार मिलेगा दोबारा मिल जाएगा दोबारा से, कुछ ऐसा है? आज नहीं, कल अगर आप इफ आई वुड से कि कल की जो रात थी या शाम थी, कल आपने देखा होगा तो कैसे शाम थी वो? इट्स लाइक इट सीम्स टू बी लाइक रेन विल गोइंग टू कम, इट सीम्स टू बी लाइक रेन इज कमिंग। लगा था ना कल अच्छी इस टाइप की बारिश आएगी कल, ऐसा था ना, Yes, sir. है ना? बट तो वो क्या फिर भी स्टिल वी गॉट द रेनफॉल टुडे, रेनफॉल मिला या बारिश मिली, धूप मिली? ओके, so it's like ओके, तो रिन्यूएबल में देखो अभी बारिश आई या नहीं आई, लेकिन हमें सोलर रेज तो हमें वापस मिली ना, धूप तो आज अच्छी आ रही है, अभी भी बहुत अच्छी धूप आ रही है ना? Yes, sir. No, ना, we are getting a proper sunlight today, so it is like in it will going to exhaust someday, but it is renewable type of thing, like आज आई खत्म हो गई दोपहर को, रात को वापस चली जाएगी खत्म, so it's again like on the next following day, like tomorrow we are going to get another sun rays. Okay, okay, just there's a one fact I wanted to share with you. How do you know how much time does it take to like sun rays to get on the earth surface? कितना टाइम लगता है सरफेस पे आने के लिए, सूरज किरण को आने के लिए? बताओ, चेक करके बताना कितना टाइम लगता है। इट इज लाइक कुछ मिनट्स है, 5 to 10 मिनट के अंदर बिटवीन, इट इज बिटवीन 5 and 10 मिनट के बिटवीन कुछ मिनट्स है, ठीक है? हाउ मच टाइम द परफेक्ट टाइम, व्हाट इज द टाइम लिमिट, और लाइक व्हाट इज द टाइम दैट इज कंसिडर्ड टू बी सन रेज कमिंग like on the earth surface, okay? What is the time that they take? Okay, अब नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल इज लाइक वी ऑल नो दैट वी विल गोइंग टू फ्यूल like fill the petrol tank or the petrol fuel tank of our bike or scooter or whatever we call. Okay, so then what happens? तो आपने fill करा, अब पानी से तो चलती ही नहीं है व्हीकल, like we don't take. Okay, 8 minute 20 second. 8 minute 20 seconds. Good, कशिश, है ना? 8 minute 20 मैं आपको बोला ना 5 से 10 मिनट के बीच में इतना टाइम लगता है। ओके, 8 minute 20 seconds। ओके, ओके, तो बेसिकली क्या होता है, आप देखो सोलर रेज को उधर से आने में अर्थ सरफेस तक इतना टाइम लगता है, 8 minute 20 seconds, एंड यू नो द स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स में पढ़ा है सबने, रिमेंबर? 3 lakh. 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना? तो इमेजिन द डिस्टेंस दैट एक्चुअली सन रेज, the from how far from we are getting the sun rays, पर्टिकुलर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होते हैं, तो ये तो 8 मिनट लग जाते हैं सोलर, तो उसको आप कैलकुलेट कर लो कितने किलोमीटर दूर होगा। जस्ट कैलकुलेट द थिंग, लाइक वी कांट कैलकुलेट, वी आर नॉट शकुंतला देवी, इतना बड़ा कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास, वी लाइक वी कांट कैलकुलेट ऑल दिस थिंग। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होता है, तो 8 मिनट लगते हैं आने में, 8 minute 20 seconds। so imagine the kilometer that is actually crossing in the universe, the solar rays, okay? So now non-renewable may up to coal, fossil fuels, petrol, petroleum products, natural gas, natural gases, okay, like CNG gas, LPG, LNG. Okay, now we come over to the third one, on the basis of ownership. अब ownership क्या होता है? आप सबके पास अपने अपने फोन है, ठीक है? All of you are using the phone, so that is your considered to be your phone, is it? Your family phone by which your siblings Yes, and sir. you study. Okay, so it is you are, no one will going to come up to you and they will going to say this is my phone and just give it to me. No one, because it is your personal, or you can say it is your individual resource. Okay, that is your home, house. Okay, then we come over to a community in which you play. Okay, there is a park out there in which you used to play, so it is a community. Although people will going to come,
there's no time to play. It is not a time to play, but no one will going to make you out of the area. Is it? That is a community resource. Park, temples, religious places, community-wise. Okay, mosque, gurdwara, and all the things considered to be the community-wise. A national, like all the monuments. All the monuments that we have. That Aravalli Biodiversity Park that we know. Aravalli Biodiversity Park is also a kind of a national resource. Why? Because it is actually giving us a what? Batao, environmental protection to the nearby areas. So due to which it is also a natural resource. Okay. Then we come over to the international resources. Okay, com- when we are coming to the international resources, give me the kilometer that I tell you that till what kilometer we have a limit in the international waters. Like it is also written as the international water. So like up to what length or up to what kilometer we have a limit? 22.2 kilometers. 22.2 किलोमीटर. अगर इतना याद नहीं रह पाए तो सबसे बेस्ट है 12 नॉटिकल माइल की आप लिख लो, है ना. अगर किलोमीटर में याद नहीं रहेगा 22.2 किलोमीटर बोला ना आपने सर, है ना. अगर ये याद नहीं रह पाता तो 12 nautical miles is also it's also very easy to remember. 12 nautical miles. Okay, till here or till 12 nautical miles we are able to consider that water resources to be a national resource, but after that it is considered to be an international resource. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. है. Okay, and maybe if I like show you the things also in the map. Did I show you on the map, Google Map? No, maybe I'm not show you like how to calculate or like till where. Like I just give you an example also. Like I was also working one of the international waters project. Okay, on the whale shark project. Okay, so I was working in that project. So what happened? It is like a real experience for me also. Like ना that सब जैसे किसी को टैगिंग मतलब सैटेलाइट टैगिंग करते तो उनके मतलब बैंड लगा देते हैं जिससे जीपीएस टैगिंग होती है. ठीक है. We are actually like locating the one of the sharks. It's not one. Actually, I'm working on 5 whale sharks. Okay. So as soon as they got into the international water, okay. So what happened? Like we lost contact with them because of the like there is a clash between the whales has happened, and due to which the collar has been removed, and we can't go in the international waters. We just can't go into the national waters. Okay, up to the 12 kilometer range. Okay, clear हुआ. तो इंटरनेशनल वाटर्स अभी देखो हमारे इंटरनेशनल वाटर में हमारा एक और वर्ड आता है EEZ, exclusive economic zone. Okay, these are the regions where we are actually doing our business activities out there. Our petroleum products are there. जितने भी हमारे पेट्रोल फील्ड, ऑयल फील्ड, रिफाइन ऑयल फील्ड है ना हमारे ओशन, तो वो सब हमारे 12 किलोमीटर के रेंज में ही होता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन गो देयर, और अनलेस वी हैव अ टाई, unless we have a partnership with other countries to dig up of oil field. Okay, clear. Okay, now next one we have the on the basis of the hmm, hmm, on the basis of the status of the development. One is the potential development stock and resource. इसमें ABCD करके अगर हम देखें कि potential development stock and resources, तो potential क्या होता है? We know the technology है, ठीक है, पर अभी हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं ना. पोटेंशियल लाइक यू आर ऑल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्स. वी आर नॉट यूटिलाइजिंग, योर पेरेंट्स आर नॉट यूटिलाइजिंग, एक्सेप्ट कि थोड़ा घर का काम कर दो, बस यही बोलते हैं ना. ये तो नहीं बोलते सब कुछ कर दो, है ना. अब अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज कैटेगरी में सेम वे अभी हम बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसको हम पोटेंशियल में लेते हैं, उससे हम ज़्यादा काम नहीं निकलवाते. मान लो अभी सोलर रिसोर्सेज, सोलर का ही, हाँ ओके, सोलर का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है. सोलर रिसोर्सेज, सोलर रिसोर्स मतलब सोलर एनर्जी. हमें पता है like now it started. Okay, there is also one of the fact that you need to know ISA, International Solar Alliance. Okay, what is it? कि ये गवर्नमेंट का, ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है to be a partner, to make a partner all the countries with basically on the topic of cancer
कंट्री, जो भी जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा धूप आती है ना कंट्री में, उस कंट्री को अपना पार्टनर मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आए और वो सब सोलर एनर्जी को हार्नेस करे. So what's going on to harness the potential energy? Okay, to harness the potential energy we are doing in that way. Clear? अब क्या होता है, डेवलप हो चुकी है पेट्रोल, हमें पता है कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, क्यों निकालना है, खत्म हो रहा है इससे निकालना है, क्यों, पता आंसर यही है ना. पैसे मिलते हैं उससे, है ना, हमें 100 रुपये में मिलता है, 100 रुपीज पर लीटर, बाकी जो भी है अलग रेट रहता है. देन स्टॉक रिसोर्सेज, in Delhi government, okay, they have started the thing S2O, like hydrogen filled buses. Like there's a mixture of hydrogen gas with the CNG gas, okay, and the buses are running in the city. You know, this is happening. Hydrogen, like this is stock. Hydro is not going anywhere. Why? Because we have a lots of enough what? बताओ क्या है हमारे पास? वाटर रिसोर्सेज बहुत है ना हमारे पास, पानी तो कमी है ही नहीं कहीं से भी, पानी की तो कमी है ही नहीं, ऐसा है ना. हाँ है ना, पानी है ना सबके पास. पानी है ना सबके पास. यस और नो. Yes, sir. So that's why we have a stock, lots of stock we have of water. H2O. H2O is simple water. It's a chemical composition name of water. H2O, hydrogen two elements and oxygen one, है ना. Then we have a what? Reserve. Reserve is water in the dam. In the dams we used to reserve the water for some specific period, isn't? Particular time के लिए अगर जहाँ पे बारिश ना हो तो उस टाइम पे we can release the water and we store the water in the dam, unless if there we don't get the water from the rain. That's the time we used to save this. Okay, clear हुआ? Yes or no? तो हो गया था ना. No, sir. ठीक है. अब देखो last time when we have started with this sustainable development or Rio de Janeiro Agenda 21, what is this basically? It was a summit, simple. Okay, Rio de Janeiro क्या था? Okay, was the time left? Just let me check. Okay, there is time. Okay, so basically sustainable development. Okay, so sustainable development में क्या होता है? क्या होता है sustainable development? Can anyone define? Development should take place without damaging the environment and natural things, and preserve for the future generation. Yes, we have to develop, or we have to develop in a way that we should not harm today's environment, and we should take care of the future also. And in that way, what we are doing, we have to consider the need of future, and we have to provide equity resources to all. Okay, so this term has developed or coined in around in Rio de Janeiro around in 1992. Rio de Janeiro is basically a city where Brazil. Brazil is a country. There is a city named for the Rio de Janeiro, and in that city, what happened in 1992? Around more than 190 countries have came up, and due to which most of the developing, underdeveloped, developed countries have came up, and they said whatever the development should be done in the country, or the like whatever the development is going to be done, it should be what? It should be done in a sustainable way. We have to create an environment, and we have to create an environment, and किस basis पे environment create करना है, बताओ, sustainable development. Okay, we don't have to use, or we don't have to like. Okay, just tell me one thing. Do you think that the super bikes that we have right now in the today's society, is it a need of that kind of bike or the supercar? Just because No, we sir. all know that just because we all know that in some time in the future we will not going to have any kind of a petrol product like petrol. So instead of saving
instead of wasting that on the supervisors and supercars, we should conserve or we should restrict the engine on the particular thing that more than 200 cc or more than 100 cc cars should not be made just to make environment friendly or just to like conserve the petrol product. This kind of initiative can we take? We can take, but the people with a good lots of money will going to say how we're going to spend our money because they need just all this kind of stuff to show or to or like splurge on this kind of things activities. Is it? So the greed and the depletion of the resources. We all are greedy humans, is it? We all are greedy humans. हम सब क्या है? लालची है ना सब. Instead of आज है कल का पता नहीं लेकिन आज भर लो है ना ऐसे ही है ना सब ऐसे ही करते हैं. We all humans are like this. So what's going on these days? Due to the greed, the resources are depleting, and due to the depletion, resources are getting exhausted. Okay. And we are not, and due to which also there one thing is a have not and have not in the society. Someone has lots of money, someone has nothing. Someone has lots of houses, but he lives in only one. Spite of that, and no one has single house or single room to live in. That's the scenario, and that's the real case of the world. It's not just only India; it's totally in the world also. Okay, and a global ecological crisis also. What is going in the global level? We all know कि कितने सारी चीज global level पे crisis चल रही है. ठीक है, रिसोर्सेज को लेके ही पूरा आपका जो मान के चलोगे अगर गल्फ वॉर या जो भी हमारा अमेरिका जहाँ पे भी अमेरिका वॉर हो रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्रोडक्ट. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट. ओके, अब देखो एजेंडा 21 है क्या लोकल गवर्नमेंट इसमें इनके क्या थे एजेंडा क्या थे. देखो एजेंडा इज बेसिकली द मोटिव ऑफ 2021 और 21st सेंचुरी. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. अभी चलो फ्रॉम आफ्टर द today is 28. After like 31st, we will going to enter in a new decade. Okay, we are going to enter in a new decade. Decade is what? 10 years. Next 10 years we are going to enter. So what will going to happen? Although we are living in the same century, 21st century, the agenda, the motive for the 21st century should be in that way. Okay, local government should draw as a local agenda and combat environmental damage and poverty and disease. Okay, like this is also COVID-19 or Corona is also considered to be the combat environmental issue, is it? And the declaration signed at the Rio de Janeiro 1992. Okay, and achieving global sustainable development also. Clear? The agenda 21 को round clear arrow देख के कहाँ पे समझा गया है कि कैसे क्या क्या करना चाहिए बस क्या क्या हो रहा है. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So today we are living like we are not going much more. Like in the 90th day, we're going to do our resource planning, and after that, the like soil will going to come, land resources will going to come. Okay. So today we're going to stop here. ठीक है. आज इतना ही करते हैं. उसके बाद फिर next day let's talk about something like moreover on this, and better you started teaching after this. Okay. Like okay. So like before coming in the class, you should like study from this also notes. Like all this note, we will going to get a better picture of like what we are going to discuss. Clear? Clear हुआ सबको? Yes, sir. Okay. So अभी किसी को कोई difficulty? I know the history part we have to discuss because because I have not done with that help. Like I not teach you that subject. So basically I have to make notes of all this. I'm going to provide or like find out something for you. Okay. So okay. So for today is all over from my side. Is there any kind of query here? Anyone of you? Yes, Riya, Muskan, Diya, Satish, Divya, Dipanshu, Dimisita, Anil, Aditi. Yes, sir. कि नो बहुत अब इतना नो है तो फिर ओके नेशनल रिसोर्सेज है इंटरनेशनल रिसोर्सेज ओके दिव्या नेशनल रिसोर्सेज है इंटरनेशनल रिसोर्सेज दिव्या इन द क्लास यस ओके दिव्या बेसिकली Yes, नेशनल sir. रिसोर्स
Natural resource or international resources is what? Basically the thing when we are considering our resources according to nations. Like we are say Taj Mahal, Lal Killa, and everything. That is totally our India's product, like India's resources. But no one can come over here and they will going to say like British has came, but they have not never able to say that it belongs to them. It belongs to India only, is it? But the there's a rivers out there in the like Brahmaputra. Brahmaputra is river is also flowing the Indian region is also flowing in the Bangladesh region. But while it's going in the Bangladesh region, we are not going to consider that that part of Brahmaputra that is our okay until and unless it's entering it's going in particular light so it's our okay till the point it ends in the border it's our and after that it's not our clear international and national resources. Hmm. International अभी तो आया Yes, sir. नेशनल इंटरनेशनल ठीक है नेशनल ओके दिव्या क्लियर हुआ आपको ओके Yes, sir. ओके थोड़ा सा आप बुक से रीड करना देन यू विल गोइंग टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस ऑल्सो ओके तो रिसोर्सेज के एक्सप्लेनेशन जो है आपको उसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे मिले ओके तो अभी क्लास ओवर करते हैं ठीक है Yes. ओके ओके चलो फिर लेट्स मीट टुमारो बाय ऑल ऑफ यू यार